Good morning, students. Class 9, Chapter 6, Exercise 6.2. In the previous video, we have complete out basic of Chapter 6 and Exercise 6.1. And I hope you all revise the properties of this chapter. It's mean linear pair, angle, vertical, opposite, alter-interior, co-interior. I hope you have revised all the properties. Now we have to start Exercise 6.2. Question number 1. In the question number 1, the figure is given in which these two lines are given, but these are not parallel, and it is a transversal which cut at 2 points. In the question, to find x and y and to prove AB parallel to CD. Solution. In the question, we have to find out x, y, and then to prove both lines are parallel. So to find out x, we observe these two angles, angle ARP and angle ARC. Both have a common arm. ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों में ये वाली आर्म कॉमन है. And same vertex are. Their non-common arms RP and RS are opposite to each other. So in this condition, both angles are linear pair, and we know that sum of linear pair angles is 180 degree. तो हमने दोनों एंगलों का सम 180 के इक्वल रखा, तो आफ्टर कैलकुलेशन x इज इक्वल टू 130 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट y. PQ and CD क्रॉस ईच अदर एट S. सो जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस कंडीशन में जो एंगल ठीक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, angles which are opposite to each other are called vertical opposite angles. So angle RSD and angle CSQ both are vertical opposite angles. So y is equal to 130 degree. It's mean we have to find out x and y. The question x and y we have find out. Now we have to prove that both lines are parallel. We observe that line PQ cut AB and CD at R and S. ये लाइन इन दोनों को R और S पर कट कर रही है, और इस कंडीशन में ये दोनों एंगल X एंड Y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. If alternate interior angles are equal, then lines are parallel. Obviously we understood that if lines are parallel, then alternate interior angles are equal, but we can use the property in converse. If alternate interior angles are equal, then lines are parallel. So because x and y is equal to 130 degree, just find out. So AB parallel to CD. Proved. I hope you understood. Note down it. Okay, now students, we have to start question number 2. In the question number 2, figure is already given, in which what is given? AB, CD and EF are parallels, and Y and Z, ratio between Y and Z is 3:7, and we have to find out x. Now its solution. सबसे पहले in the question, if ratio is given, then you remove the ratio between angles. It is given that y ratio z equal to 3:7, so let y equal to 3a and z equal to 7a.
because variable x is already used, so we can't any other variable x एंड y और z को छोड़कर आप कोई वेरिएबल यूज कर सकते हो, तो हमने वेरिएबल a यूज करा है, तो y इज इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a. नाउ इन दीज थ्री एंगल्स we can find out a relation between z and x because both angles make a shape like a z. Remember, अगर शेप ऐसी बनती है या फिर इस तरह से बनती है, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो हमने इन दोनों एंगल्स में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा डिफाइन करना है कि हम कौन सी पैरेलल लाइन स्टडी कर रहे हैं. ये दोनों पैरेलल लाइन एंड इट इज अ ट्रांसवर्सल. AB and EF parallel and PQ as a transversal. So it's mean both angles are alternate interior angles because Z equal to 7a, so X is equal to also 7a. So X की वैल्यू भी हमारे पास 7a है. It is also 7a but it is a 3a. Now we have to consider a relation between these two angles because these two angles are interior and lie same side of a transversal. AB and CD are parallel, PQ is a transversal, then angle 1 and angle 2 both lie one side of the transversal. So these angles are co-interior angles, तो इनका सम 180 होगा. x और y इक्वल टू 180 डिग्री, तो आफ्टर कैलकुलेशन a इज इक्वल टू 18 डिग्री. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट x, सो x इक्वल टू 7a, देन x इक्वल टू 126 डिग्री. आई होप यू अंडरस्टूड. नोट डाउन इट. Okay student, now we have to do last question of this video. It's mean question number 3. It's a very easy question. In the question figure is already given. What is given? AB parallel to CD, EF perpendicular CD. It is a symbol of perpendicular. Perpendicular मतलब 90 डिग्री. एंड एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री. टू फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE. सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है और ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों एंगलों की शेप अगेन कैसी बनेगी? यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बट वी हैव टू डिफाइन दैट इट इज गिवन दैट AB पैरेलल टू CD एंड टेकिंग GE एज अ ट्रांसवर्सल. ये दोनों पैरेलल और GE को एज अ ट्रांसवर्सल हम लेके चलेंगे. देन एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED. AGE and GED both are equals alternate interior angles, so angle AGE equal to 126 degree. It's our first answer. Now we have to find out angle GEF. GEF, very simple. The complete angle is 126 degree and this angle is 90 degree, so this angle can be easily find out. According to figure we observe that angle GEF is equal to angle GED minus angle FED. तो GEF की वैल्यू 36 डिग्री. सेकेंड आंसर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एंगल FGE. अगेन दीज टू एंगल्स AGE and FGE have a common arm GE. हैव अ कॉमन आर्म GE एंड ये हो गया कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर.
So these angles make a linear pair. Sum of both angle is 180 degree. So after calculation, angle FG is equal to 54 degree. I hope you understood. Note down it. Thank you.